Example is there are basic earnings, monthly earnings of 3 months of certain people, and their earnings are there. This is a basic example of a record, 18 rows, like around 15. It could be a possibility of 100 records, 200 records, 300 records, and so on. Then at that point of time, a lot of other normal functions, their sorting information or calculation will not be feasible or convenient for you. At that point of time, you would be needing the Excel's good features of Sumif, and Sumifs command. First of all, let me take this schedule in middle of this paper, and there are certain questions which need to be answered. We will just go through all these one by one and find out the answer of each using the functionalities of Excel. The first question is saying what is the total of earnings altogether? It's very simple. I think everyone can put this formula, and there are so many ways to put this formula of at the rate sum formula of sum, but we'll take the advantage of a, like there are many ways we can find the formula over here. We can say sum formula, and we can go to a sum. There's a one way. The another way is to write directly is equal to sum. And there is another way that we can use this auto sum. If we put in the last record the X cursor and use this auto sum from the menu, it will automatically highlight the area of the sum. That is, we can see over here that it has highlighted the sum of N9. N9 means like this one. This is N9 to N22. So this is starting from if we work it out, the total is N8 to N22. So the total has come 15,700. If we delete it from, we can also directly put over here is equal to every formula starts, already from sum. Then Excel will give the all formula which have a start of the word sum. Use sum. We can use this way. Press shift and highlight. It's a 15,700. We want to, because it's an amount, we want to format it out. We can use this format section of this menu, home menu format. We'll format it with the words. Now it has come to a 2-digit. We can reduce a digit to 0. And the second one is that here we'd like to another format of either wording is equal to like accounting. What has happened? The for question answer number 1, the altogether we have find out and made it possible. The second question is what is the total amount of earning of each person? We can quickly find it out through a different way, but I will tell you the only formula of the sum. Okay. We can say here you need to put a formula of sum if, because there are different months, 3 months, and every person name of every person is appearing at different records, not in continuously, and so that we have to find out the total amount earning of each person. So here I would like to put the formula. I take this one. I take this figure, and or rather put this figure is equal to copy enter. So I need to know the total of the earning
out of this record. And if this formula should work like this one, sum if, we will use sum if. It starts, it says the first range and the criteria. The first range we have to copy is where we have to find out the criteria, and that is Ali. So this is the range. I have put the cursor and highlighted by pressing it, comma, comma. Then in Ali, because Ali is a name, is a text name, it's not a numeric number, it's a alphabets, and it's a kind of a string. There's a different IT technically word for numeric and non-numeric. And we have to find the answer of this Ali over here. I'm highlighting here this one, putting comma and highlighting this again. So what I found out that Ali has got 1750. We can find out Ali, this one. If we press Control and click again Ali and click again Ali, we can see over here 1750 is the sum of 3 records. So automatically, like if suppose next record is also Ali, हम गलती से असलम लिख देते हैं. अगर मैं यहाँ अली लिख दूं तो अली के 1000 रुपए ऐड होने से 2750 रुपए. तो दिस इज एडवांटेज ऑफ फार्मूला. अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूले में भी हम यही फार्मूला फिट करते हैं. What we can do it, we have to put this formula every time we write to, instead of writing a formula, we can utilize the main features of Excel. First of all, I can use the, instead of putting the criteria directly, if there are a lot of criteria, I'm like F2 and taking this one. It's also the same. H8 पे जो भी फेयर होगा, अगर मैं यहाँ पे तब्दील कर दूं, असलम लिख दूं, तो 3000 रुपए, 3000 rupees will come over, right? So if I put this Excel formula, copy, the answer is 3000. But problem is, if I put the cursor over here and इस सेल में जो डिस्प्ले करता हूं, तो यहाँ मुझे अली रेड कलर में नजर आ रहा है बॉक्स में. यहाँ पे अली H8 पे है, इस सेल का फार्मूला भी H8 है, ये दोनों रॉज इस पे हैं. लेकिन जब नीचे फार्मूले पे जाते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जो 9 है H9, वो H9 हो गया H, और ये 9 रॉ नंबर, लेकिन ये रॉज भी चेंज हो गई. तो इन रॉज को फिक्स करने के लिए हमें इसके ऊपर एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ता है. यानी हम इसको कहेंगे कि जी हमने आपकी जो ये रिकॉर्ड है इसको हम फिक्स करते हैं, तो F4 दबाएंगे, ये रिकॉर्ड फिक्स हो जाएगा. ठीक, यहाँ भी F4 दबाएंगे, ये रिकॉर्ड हमारा फिक्स हो गया. यानी डॉलर निशान रॉ नंबर और कॉलम नंबर से पहले आ जाता है. एंटर. अब आप देखिए, अब इन चारों का तो ये डिफरेंट क्लास में, अब इनका सम टोटल करके देख लेते हैं. सम 15,700. This is 15,700. This is 15,700. So with the use of how quickly I have come to know that this, अगर ये रिकॉर्ड जितने लंबे चले जाएं, महीने पूरे साल पे, अभी तो ये 3 महीने का रिकॉर्ड है, पूरे साल 2 साल 3 साल, या इसमें जितने लोग ऐड हो जाएं और अमाउंट गलती एरर हो जाए उसको करेक्शन कर लें, तो फार्मूला और दिस फार्मूला you will immediately and always come to know what is the total current total which you are also getting, instead of this only this formula you are getting this information, and per person wise. Our third question, what is the amount of earnings in each month? Now we can also use the same formula. तो हम मंथ में करेंगे, हमारे पास एक जैन है, फेब है और मार्च, ये 3 महीने. सेम फार्मूला वी विल यूज, सेम लिमिट,
सेम चीज हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको ये कॉपी किया है जैन का, लेकिन अब इसमें सिर्फ फर्क इतना सा है कि जैन में यहाँ पे हमसे एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि हमने इसकी एक सेल को, रेंज में से एक सेल को फिक्स किया था। हमें ये दोनों सेल फिक्स करने चाहिए, राइट? ये हमने फिक्स किए, फिक्स करके कॉपी किए। अब हम इसी सेल को कंट्रोल सी, और या इसको हम या कर्सर रखते हैं, यहाँ से कॉपी, एयर, प्रेस। अब यहाँ पे आके देखते हैं तो ये सेम जनवरी को तो ले रहा है एरर में, लेकिन जनवरी को हमें इस कॉलम में देखना है, क्राइटेरिया अमाउंट का कॉलम ठीक है, विल पुट इमीडिएटली टोटल, और इसमें हम इसका फिर सम निकालते हैं। इसका सम हमको पता चलता है 15,700। सेम, it should be same, of course. In a 4 month, asking what is the total amount of earning of each city, the same formula we can use. Arach, Karachi, Lahore, Islamabad. Here, you see that after fixing the dollar sign, this rate, the things are okay. But the only thing is that we have to put this column. हम इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग कैसे करेंगे, हमने कर्सर से इसको ड्रैग किया और यहाँ पे रख दिया। अब देखिए कराची का, लाहौर का, अगर हम यही चीज कॉपी करते हैं ऊपर से फार्मूला, स्टिल रिजल्ट इज द सेम। So we have come to know from this database immediately what is the total, what is the total of each person, what is the month-wise total, and what is the city-wise total. There is another here. Now it's so if I'll copy this one again for whole range, इसको टेस्ट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हमने ये चेक किया, इसमें ऑटो सम, सब सम हो गया, इसमें लगाया हमने ऑटो सम, ये सब सम हो गया। अब आप ये देखिए कि ये रेंज है, दिस इज द टोटल, यानी जनवरी के महीने का जो टोटल था वो 4,350, विच इज इक्वल टू दिस वन। 4,000 7,000 ये टोटल आ रहा है, मैच कर रहा है जनवरी के महीने का टोटल। ग्रैंड टोटल 15,700 मैच कर रहा है, और ये हम मैच कर रहे हैं अली की पोजीशंस 1750, विच इज इक्वल टू दिस वन है 1750, 3,000, 5,700, सेम। तो विद यूजिंग द सम इफ्स हमने एक ही फार्मूले में दो क्राइटेरिया यूज किए, जबकि यहाँ पे हम सिर्फ एक क्राइटेरिया, सम इफ में एक क्राइटेरिया यूज करते हैं, while in sum ifs we have used utilized two criteria. ठीक है जी। अब इसमें 80% जो अमाउंट है ये टोटल अर्निंग का, 80% ऑफ दिस मंथ वाइज पोजीशन ऑफ ईच पर्सन, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द 80% ऑफ ईच मंथ पोजीशन जो उसने स्पेंड किया, एंड सम ऑफ ईच पर्सन मंथ वाइज आफ्टर स्पेंडिंग, बैलेंस कितना बचा। यानी बैलेंस इज डेफिनेटली अगेंस्ट द परसेंटेज। हम अली की अगर परसेंटेज निकालते हैं तो अली की जो परसेंटेज आती है वो आती है यहाँ पे 80%, 50%, 60%, 90%, एंड फ्राज इज 75%। ये स्पेंड है, यानी इसमें से अगर हम ये एक्सपेंसेस निकाल दें तो फॉर द टाइमिंग हमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को यहाँ से मूव करके इधर ले आए, ठीक है। अब ये हमारी बेसिकली स्पेंडिंग परसेंटेज है। हम इसमें से ये नाम यहाँ पे लेके आते हैं दोबारा, और हम इसमें से कहेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बैलेंस, यानी दिस अमाउंट में से 80% खत्म होने के बाद व्हाट इज द सम मंथ वाइज, यानी हमें जनवरी के महीने की एली की पोजीशन पता चले। तो हमारा सिंपल फार्मूला है, सिंपल।
इस फिगर को लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1 minus this. It means that 20% would be the saving for the leave for January. Okay. हमने इसको क्लिक किया तो 20% 100 रुपीज ने सेव कर लिए और डेफिनेटली 80% इसने स्पेंड कर लिए क्योंकि आंसर इज क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज द सम ऑफ द ईच पर्सन मंथ वाइज आफ्टर स्पेंड. अब हम इसको फिक्स करते हैं अली की इसमें से F2 करेंगे तो दोनों फिक्स हो गई. अब हमारी रॉ फिक्स है, डॉलर का निशान इससे पहले रॉ फिक्स है, इसमें हमें रॉ फिक्स इसमें रॉ फिक्स नहीं करनी, हमने इसमें कॉलम फिक्स करना है. हमने कॉलम फिक्स किया और इधर हमने कुछ भी फिक्स नहीं करना. ठीक है, ये हमारा 100 हो गया. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल इसका अगर हम अली को यहाँ पे कॉपी करते हैं इस फार्मूलों को, कॉपी और अगेन कॉपी. ठीक है, टोटल टोटल यहाँ तो आ ही रहा है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखिए अली का हमने 1100 यानी 1750 से जो इस महीने में अली ने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिक्स क्यों हो गया. ओहो है, अबे इसको भी तो फिक्स करना था. सॉरी, हमने इसको फिक्स कर दिया, अबे इसको फिक्स करना है और ये रो है इसको फिक्स नहीं करना. ओके, दिस इज द टोटल फिगर 100 रुपीज 100. यहाँ पे हमने 750 पैसे have again wrongly. This one is the answer, right? This is the answer now. अब हम इसको कॉपी कर लेंगे. तो आप देखिए कि इसमें कॉपी में जिस जिस सेल का कॉपी है वहां पे चल रहा है और वो जो अमाउंट है दैट लाइक 150 है. 150 में से 90% निकले तो 10% बचे तो इसने 15 रुपीज 10% ऑफ दिस अमाउंट. ये टोटल सेविंग हो गई. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिटी वाइज सेविंग फॉर ईच मंथ आफ्टर स्पेंडिंग. And the last one is what is the average earning per person per month per city? Average person per month per city. Average earning total. Average earning अगर हम देखेंगे there were 5 people were there. हम इसमें average earning करते हैं. Average $870 or average earning of total saving. This is the average earning for January, average earning for February, and average earning for March. Average earning per city.
यहाँ पे हमने एवरेज का ये फॉर्मूला लगाया. There are three figures, three city. Average earning per city is 5,000. एवरेज अर्निंग पर मंथ अगर हम यहाँ लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देख ली है, ये 3 इस तरह टोटल पे आ रही है, 3,140 यहाँ पे फिगर आ रही है, बट लेट्स आल्सो चेक द एवरेज अर्निंग. $5,000 same. Average earning per city or per month, both are same. What is city-wise saving for each month? अब हमने यहाँ पे city-wise saving each month, the same formula जो हमने अली के लिए यूज किया था, हम यहाँ पे यही चीज हम ये यूज कर लेते हैं सिटी वाइज पोजीशन के लिए. कि अगर हमारे पास सिटी के नाम है और इसमें सेविंग हमारे पास आती है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं सिटी की सेविंग है और सिटी सेविंग आफ्टर सिटी वाइज सेविंग फॉर ईच मंथ, ये मंथ की सेविंग है हमारे पास. यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, कॉपी करके सबकी रेंज हमारे पास सेम है, सिटी है, ये जनवरी है, सिटी से हमारा इसमें से फर्क इतना सा है कि जी पोजीशन जो है, अब पहले हम सिटी और कंट्री जो वो देख रहे थे, तो ये एवरेज हम ये वाली जो पोजीशन है इसको हम एवरेज अर्निंग सेम फार्मूला हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको देखें ये सेम फार्मूला, लेकिन इसमें रिकॉर्ड जो है 3 आने चाहिए. कॉपी और है नाउ. अब हमारे पास फॉर पेशेंटली लर्निंग, गुड लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेसन.